हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो हमने पिछले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया था, यस, रिलेटेड टू योर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर लेसन, दैट इज एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग we are using which formula? Compound interest formula. What is that? Just recall that. Yes, amount is equal to compound interest is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. Yes, इस formula को हम लोग use करने वाले हैं. Let us see the question. Question number 1. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Annum मतलब साल में. Okay, after 1 year. Okay. So find the population in 2001 and find the population in 2005. Let us see one by one. First one we will consider. Let me tell you one thing. Suppose you took the loan from the bank, that is your principal amount. Okay. And after 2 years, you are paying it back with the interest, that is 1,200. That is your amount. Clear? तो यहाँ पे जो 2 year था, दिस इज योर टाइम, मीन्स n. ओके, एंड एट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज 5%, दिस इज योर रेट. ओके, इस तरह से हम करते थे, है ना. सो जो आफ्टर 2 year जो मिल रहा है, दैट इज आवर अमाउंट. ओके, आफ्टर 2 year विच वी आर गेटिंग, दैट इज अमाउंट. बट इन द बिगिनिंग व्हाट वाज देयर, नो, दैट इज आवर प्रिंसिपल अमाउंट. नाउ लुक इट हियर, दे हैव गिवन. Here we are not discussing about the amounts and all. Here population is given, but the method is same. So this method only we have to follow. So 54,000 in 2003. And question is what? You have to find the population in 2001. मतलब we are coming back. तो हम पीछे आ रहे हैं, है ना. We have to now, your population in 2003 is given. That is amount is given to you. And you have to come back and you have to find the population of 2001, means you have to find the principal amount. Hope आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. So let us see the question. So here we are coming back, means first amount we want, that is principal amount. We don't know that amount, so principal amount we need to find. Amount is given to us, that is 54,000. Okay, amount is given to us, that is 54,000. Principal amount we need to find. Your rate is given, that is 5%. And time, n means time. Time is how much? Time is 2003 to 2001. We are coming back, means how many years we are coming back? 2 years. Yes, so the time is 2 years. Okay. Now you know the formula of compound interest. Yes, amount is equal to principal plus principal amount multiplied with 1 plus R upon 100 raised to n. Yes, this is your formula. So in this formula you need to substitute now A value. What is your A value here? Yes, it is 54,000. So 54,000 is equal to P. We don't know P, right? As it is, we need to find P value into 1 plus R upon 100. Your R is 5 upon 100 raised to n. N is time, that is 2 years. Hope you got this, right? Here we can simplify. 5 ones are 5 20s are. So 1 plus 1 upon 20 square it is now. So 54,000 equal to P into, now you simplify this, LCM is 20. So 20 plus 1 हो जाएगा यहाँ पे raised to 2. Okay. Now 54,000 is equal to P into 20 plus 1 is 21 upon 20 square, मतलब 2 times. So 21 upon 20. अगेन फिर से एक बार आएगा, स्क्वायर है ना. So 21 upon 20. So now we want this value. Either you can multiply these two, 21 into 21. You can do that. 21 into 21 into
21 is 441. Okay, this is 441 upon 20 square is 400. So this is simplification of this bracket. Okay, now we want principal amount, so we keep as it is and take this complete term to that side. You know that whenever you will take the complete term to that side, it becomes the reverse fraction. If 2 by 3 comes this side, it becomes 3 upon 2. आपको पता है ना ये चीज? Yes, similarly वही करना है हम लोगों को अब. So P keep as it is 54,000. तो ये कंप्लीट टर्म इसके साथ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दैट इज 400 अपॉन 441. नाउ you have to simplify this complete multiplication, division and all. You will get 48,980. यहाँ पे पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे कंप्लीट राउंड फिगर करके मैंने लिख दिया है, दैट इज 80. सो दिस इज योर प्रिंसिपल, यस, पॉपुलेशन ऑफ 2001. This is population in 2001. Similarly, one more thing they have asked you now, what would be the population in 2005? मतलब 2005 मतलब आगे जा रहा है. 2003 का हमें दिया गया है, यहाँ पे 2005 का हमें फाइंड आउट करना है, मतलब आगे बढ़ रहा है. आगे बढ़ रहा है ना, तो अमाउंट यू हैव टू फाइंड. नाउ योर प्रिंसिपल बिकम्स 54,000. नाउ योर प्रिंसिपल विल बिकम 54,000 for the second question, and the amount you need to find, that is after 2 years, remaining all same. तो यहाँ पे amount find out करना है आपको. Let us see this one, second one. Okay, second one देखते हैं अब हम. Okay, तो यहाँ पे अब हमें आफ्टर 2 years करना है. आफ्टर 2 years 2003 का दिया है, मतलब दिस इज बिगिनिंग, that is principal amount. So principal amount we know that is 54,000. Okay, then we want what is given, rate is given, that is 5%. Time is given again of 2003 to 2005, again 2 years, and we need to find the amount we don't know, we have to find the amount. Same formula, amount we need to find, principal amount we have to consider 54,000 into 1 plus 5 upon 100, rate is 500, raised to n is 2 year. Okay, now this is 54,000, again same, here get cancels 20, so 21 upon 20 raised to 2 हो जाएगा यहाँ पे फिर से. So you can write here 54,000 into 21 upon 20 into 21 upon 20, मतलब स्क्वायर, मतलब 2 times. Here I am not doing a square of this number क्योंकि easily हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. So I have written separately. तो this 0, 2 0 cancel with these 2 zeros. Okay, next 2 ones are 2 2s are 4, 2 7s are 14, and 1 0 remaining here. Yes, then again it is 2 1s are 2 3s are 6 5s are 10, 135. So 135, 21 into 21 is 401. Okay, I will write this side. So 135 is remaining. 135 into 21 is 441. Now multiply these two together. 135 into 441. You know the multiplication. Multiply and you will get 49535 is the answer. So the population in 2003 is 59,535 people. So in this way we can solve this question. Let us see the next question. Yes, our question number 2. In a laboratory, the count of bacteria is a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Okay, find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. Okay, काउंट आपको इनिशियली में कितना काउंट था वो दिया गया है, एंड योर रेट इज, एंड योर टाइम एंड द रेट इज ऑलवेज विद द सेम यूनिट.
पर आवर दिया गया है, पर आवर दिया गया है, पर एनम, पर आवर दोनों सेम होते हैं, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका रेट एंड टाइम दोनों को सेम देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनिशियली दिया गया है, नाउ यू हैव टू फाइंड आफ्टर 2 आवर्स बैक्टीरिया का काउंट कितना हो सकता है। लेट अस सी क्या क्या दिया गया है यहाँ पे आपको। यस, यू नो दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इनिशियली मतलब बिगिनिंग में जितने काउंट थे ना बैक्टीरिया के, दैट इज गिवन, मतलब प्रिंसिपल इज गिवन। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 506000। प्रिंसिपल हो गया हमारा, रेट दिया गया है दैट इज 2.5, ओके 2.5, एंड टाइम इज गिवन टू यू दैट इज 2 hours, and you have to find the amount you have to find. A we don't know, but you know the formula. So A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे you have to substitute P value 506000 into 1 plus R is 2.5 upon 100 raised to N is a time that is 2, ठीक है। Now 506000 into, यहाँ पे आपको डेसिमल निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, डेसिमल अगर न्यूमरेटर में निकालना है, रिमूव करना है, तो यू हैव टू गिव द एक्स्ट्रा 0 इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 plus 25 upon 1000 हो जाएगा, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में से एक वैल्यू, एक जीरो को कम कर, एक डेसिमल को कम कर दिया है, रेज टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 25 1s 25 4s 100, सो 40 हो जाएगा दिस ब्रैकेट। नाउ सिंप्लीफाई दिस 506000 into 1 plus 1 upon 40 square हो जाएगा। Now you have to simplify this. So you have to simplify. Let us see how to simplify this. Yes, 506000. This is 40 plus 1 upon 40 with the help of LCM that you know already. स्क्वायर हो जाएगा, सो 506000 इंटू 40 प्लस 1 इज 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है 2 times यू हैव टू डू। सो यहाँ पे 0 0 चला जाएगा, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस, यू विल गेट 531616.25 अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज योर अमाउंट। सो द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2 hours is this much. In this way we have to solve. Let us see the next question. This is the last question of your lesson, comparing quantities. Question number 3. Let us see. A scooter was bought at the rate of 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, डिप्रिशिएटेड का मतलब पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाई एनीथिंग, उसका रेट क्या होता है, हम यूज करने के बाद, मीन्स अ स्कूटर वी आर यूजिंग फॉर 1 year, मतलब अब वो स्कूटर न्यू नहीं है, दैट इज नॉट अ न्यू स्कूटर। सो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू सेल दैट बाइक और द स्कूटर, द प्राइस विल बी डिक्रीजिंग। डिप्रिशिएटेड मीन्स आफ्टर यूजिंग द वैल्यू विल बी डिक्रीज ऑन सम आइटम्स। ओके, तो यहाँ पे अब हमने देखा कि always when our principal amount is given, okay, after some time with some rate we will get one amount, right? For example, 100 rupees we took the loan, after 2 years with the 5% we paid 1500, मतलब amount आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे increase हो रहा है। 100 था, ओके 150 हो चुका है, ओके मतलब 100 150, सो इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऑल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग, बट यहाँ पे अब क्या आ रहा है, डिप्रिशिएटेड, मतलब वैल्यू इज डिक्रीजिंग नाउ। तो एट द टाइम हाउ टू फाइंड,
everything is same, but when value is decreasing, आपका फॉर्मूला क्या है, p into 1 plus r upon 100 raised to n दिया गया है आपको, राइट. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, so it is applicable when values are increasing, but when it is decreasing you have to do here, instead of plus you have to do minus. This is simple. So with the help of this formula, let us solve this. Yes, what is given, that you have to write. Principal is given, P is given, so that is 42,000. Rate is given, that is 8%. Time is given, that is 1 year. Okay, you have to find the amount. That's all. Simple. So now you know the formula. Amount is equal to, yes, principal into 1 plus की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है. Why? Because value is going to decrease now. 1 minus r upon 100 raised to n. Now substitute the value. P is 42,000 into 1 minus your r is 8 upon 100 raised to क्या हो रहा है आपका, n is 1. Okay, now simplify 42,000. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका LCM is 100. So 1 into 100 100, 1 into 100 is 100 minus, so 100 into 1 is 100, 8 into 1 is 8 raised to 1. Raised to को कोई कैरी करने की जरूरत नहीं, power is 1, so you can leave this here itself. So 42,000, 2,000, so 100 minus 8 is 92 upon 100. 92 upon 100 हो रहा है. 100 minus 8 is 92. Power is 1, so I left it here. So these two zeros cancel, these two zeros cancel. Now you have to multiply 420 into 92. So देख लेते हैं, 420 into 92 आपको करना है. 0 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 0 0, 9 2 जा 18. Yes, 1 carried. 36 plus 1 is 37. 0 4 16, 7 plus 1 is 8 and 3. So 38,640 is the amount of the scooter you are going to buy. Okay, so that amount is equal to 38,640 rupees. So in this way we can solve. If the number is increasing, then you have to add, means you have to use formula P into 1 plus r upon 100 raised to n. But when amount is decreasing, you have to use P into 1 minus r upon 100 raised to n. This is the difference. I hope आपको complete comparing quantity समझ में आ गया होगा. This is not a difficult lesson. This is the easiest chapter. Okay. So practice करना. अगर फिर भी कोई doubt आ रहा है तो please comment me in the comment section. And you are not subscribing my channel, like, share, subscribe my channel. Thank you. मिलते हैं अगले lesson के साथ. So comment me which lesson do you want next. Bye bye.